Morning. Today we will start Indian National Movement of class 8, and it is also in class 10th also with the name of Nationalism in India, somewhat similar with chapter class 8th. So first of all, English landed in India as a trading company. The East India Company come basically only for trade, but Indian political condition, as you know, was unstable at that time also, and during the invasion of Muhammad Ghazni or Muhammad Ghori, India was not united. Basically, they were autonomous states. They were fighting with one another. So it helped the English to acquire more and more territory in India, and the trading company became a political power in India. But the Indian did not lack patriotic feeling in themselves. They fight against the British in the revolt of 1857, the famous revolt of 1857. But the revolt was failed. But nationalism, the feeling of nationalism, could not be crushed in the mind of the Indian people. And to gain the independence or to gain some rights, the Indian National Congress was formed in 1885. But what were the reason why the Indian National Congress was formed? So basically, the important cause, the chief cause of political awakening in India were as follows: chief causes of the political awakening in India. Number one, the effect of 1857 revolt. Though the revolt of 1857 failed, yet it inspired a great number of Indians to fight against the British injustice. It was said that the death of Julius Caesar was more powerful than when he was alive. In the same way, the 1857 revolt gave inspiration to the Indian people. Second, racial bitterness. Racial means race. The English considered themselves superior to the Indian because they were white, and the Indians, British thought themselves as civilized in comparison to Indian, and they addressed Indian as swine or in a very inhuman way, and it was not liked by the Indian people. As in America and South Africa, where the blacks could not be traveled in first class AC in the same way, the Indian people were subjected to racial prejudice and were regarded unintelligent and uncultured. They could not travel in the coaches, which was exclusively reserved for the Europeans. Third one, political unity. As we know that before the coming of British, India was not politically united. There were regional states like Watan Jagirs of Rajputs, of Marathas, of Sikhs, of Jats. Politically they were not united because there was no centralized administration. Though Mughals were in the center, but after the death of Aurangzeb, the later Mughals were not so powerful as the Aurangzeb. So the Jats, Sikhs, Marathas, Bengal, Awadh, Orissa became independent. But when the British came, they provided a unified administrative systems, same law. So politically, India came under a single unified administrative unit, and it gave rise to nationalism in the feeling of the Indians. अगर हम एक होते हैं तो naturally हमें feeling भी एक सी होती है. तो इससे इस political unity, though Britishers gave political administration to their benefit, but it benefited Indians more than the British. Fourth, means of transport and communication.
Lord Dalhousie, during the governor generalship of Lord Dalhousie, the first railway line was established in 1853 between Bombay and Thane, and the telegraph lines was also set up during the governor generalship of Lord Dalhousie. And these new facility made it possible for the people and the leaders of different parts of the country to sit together and chalk out a common program for the liberation of their country. The leaders of the national movement used these means of transport and communication to carry their message of national movement to every nook and corner of the country. Though अगर its negative effect की अगर हम बात करें तो the prejudiced Indians or the narrow-minded Indians thought that this means has been developed to convert them into the Christianity, because if they would not convert it into the Christianity, then the Indians would be thrown before the railway lines or would be hanged to the telegraph poles. Fifth, effects of English language. In the charter, the 8th class, the students are very familiar that the Charter Act of 1813 provided 1 lakh rupees aside for the education of Indian. But for the next 10 years, this 1 lakh rupees had not been utilized because there was a difference, there was a controversy. This 1 lakh would be used whether for the development of Indian language or whether for the European language. So, during the time of government generalship of Lord William Bentinck, and due to the effort of Lord Macaulay, it was made that now the 1 lakh rupees would be used for the promotion of European language. Though the motive of Lord Macaulay was to create petty clubs or to create Indians bodily Indian, but in soul they would be European. But imparting the teaching of English had quite the opposite effect. The knowledge of the English language afforded context to the Indian youth with their counterparts in other countries. It gave them the strong sentiments of liberty, equality, and fraternity prevailing in the different European countries greatly influenced them, and it became the lingua franca of the Indians. Influence of the Western ideas. The propagation of Western ideas too had a significant role in bringing about national awakening among the Indian people. In Europe, as you know, the French Revolution gave the strong feeling of liberty, equality, fraternity, the American Revolution of Independence, the Russian Revolution. Russian Revolution, though, in 1905, it is before that we are talking. The history of England taught them that the people were endowed with the right of deposing and punishing a despotic ruler like Charles I, and the philosopher Rousseau, Mill, their philosophy arose them the sentiments of freedom and nationalism. It was the knowledge of Western ideas which broadened the outlook of the Indians by ending the century-old narrowness of their views. Means century-old narrowness of these views because due to the Western ideas, their thinking became broadened. Earlier, they were not conservatives in their own field, like uh, the feeling of patriotism or nationalism ki this is our rights, we should get it. ये feeling उनके मन में आने लगी due to the influence of Western ideas or due to the learning of European language or European literature. Influence of social and religious reforms.
This is influence of social religious reform. It is in this we it is only a cause for a rising political awakening in India. But in class 8, one separate chapter is also of this social religious movement. It is in class 8 also. So here मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी. What were the influence of social and religious reforms, or what the reformers has done with the society. The great social reformers like Raja Ram Roy is also known as the father of Indian Renaissance. Renaissance means awakening or revival. Now, scientific knowledge, scientific thinking or logical thinking. Raja Ram Roy. So here I will इसका मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी. First, influence of social and religious reforms. It is in 8th class chapter also, like Raja Ram Mohan Roy, and the earlier that effects of Indian effects of English language. In it, I have also mentioned about the Charter of 1813. That is also in the chapter 8, a separate portion of development of education. तो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको बताया था. Raja Raman Roy, also known as the father of Indian Renaissance, he also set up Brahmo Samaj in Bengal, and he was the great supporter of women education, or he stood against the social evils like Sati Pratha and all that. And due to his effort, Lord William Banting banned on Sati Pratha in 1829. And though सोशली अगर हम एडवांस होते हैं तो उसके बाद पॉलिटिकली भी हम एडवांस हो जाते हैं. हम अपने इट क्रिएट अवेयरनेस इन अस. एंड स्वामी दयानंद सरस्वती, Swami Dayanand was the first to raise the slogan that India is for Indians. Swami Vivekanand, Swami Ramakrishna Paramahansa, and Besant. They inspired in them the feelings of self-respect and national pride. Earlier, the Indians, due to the influence of British, the Indians thought their culture is inferior in comparison to the Western culture. But they inspired in them the feelings of self-respect and national pride. Like Swami Vivekananda, when went to Chicago in a religious conference, advocated in favor of the Hinduism or the Hindu culture or the Indian culture. And so it inspired them that our culture is not inferior to the European culture, and it inspired and it evoked the sentiments of patriotism and nationalism and inspired the people to fight against injustice. Like Swami Dayanand asserted that even a worse national government was better than the best of the foreign rule. Lokmanya Tilak remarked, Swaraj is my birthright and I will have it.
In this way, the social and religious reformers helped in bringing about a national awakening and a sense of nationalism among the Indian people. Indian literature and press. Even today, literature and press helped in arousing and focusing any event. कुछ भी इवेंट को अगर प्रेस फोकस कर रही है, मीडिया फोकस कर रही है, तो लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान उस तरफ हो जाता है. इन द सेम वे उस समय जो इंडियन लिटरेचर प्रेस थे, दे ऑल्सो हेल्प इन अवेकनिंग नेशनलिज्म, national awakening among the Indians. The 19th century turned out volumes of nationalist literature like Bankim Chatterjee. Anand Math is regarded the Bible of modern Bengali patriotism. Rabindranath Tagore, Deenbandhu Mitra, they all helped in arousing national awakening among the Indian people. Indian press is like a pressure group. जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा लॉ निकालती, तो वो प्रेस जो है, वो जो न्यूज़पेपर्स जो थे, वो हाईलाइट करते थे इंडियन गवर्नमेंट की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की वीकनेसेस को, और इसीलिए काफ़ी बार प्रेस एक्ट लागू किया गया, इन्फोर्स किया गया और प्रेस को कर्ब किया गया. And the press added fuel to the burning sentiments of nationalism. Like if we talk of the heading of the one, एक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, दैट इज युगांतर की. युगांतर एक न्यूज़पेपर था, रेवोल्यूशनरीज निकाल रहे थे. युगांतर, in the Yugantar it was written that the 30 crores of people should raise the 60 crore of their hands to oust the British from India. कि जो 60 करोड़ की जनता है, उसको अपना 30 करोड़ की जो जनता है, उनको अपने 60 करोड़ हाथ आगे बढ़ा के ब्रिटिश को यहाँ से निकालना चाहिए. तो यू कैन सी बाय दिस स्टेटमेंट दैट कि उन्होंने इंडियन में एक नेशनल अवेकनिंग या पेट्रियटिज्म की फीलिंग को भरने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी. सोशल इनजस्टिस. The English did not treat the Indian people as their equal. मतलब वो अपने बराबर का नहीं मान सकते थे. उनकी डिग्निटी को हमेशा डाउन किया गया, उनकी कैपेबिलिटी को हमेशा अपने बराबर नहीं माना. चार्टर एक्ट की अगर हम बात की जाए, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और 1858 की अगर हम बात की जाए, तो जो आफ्टर द रिवॉल्ट 1837 जो पास किया गया था, उसमें यही कहा गया था कि नाउ नो इंडियन विल बी डिबार्ड. Everybody would get the equal opportunity respective of the caste, religion, sex and whatever. But in practice, the educated Indians were never posted of high offices suitable to their education and intelligence. For example, Surendranath Banerjee, a great nationalist who qualified for the ICS examination, was appointed, no doubt, but was removed after a short time. So this great injustice was not liked by the Indian people. Economic policy of the British. Again, ये हालांकि हेडिंग ही है, लेकिन अगर हम 8th क्लास की बात की जाए, तो ये भी 8th क्लास में एक अलग ही चैप्टर है. उसमें ये है कि लैंड रेवेन्यू या इंडिगो कल्टीवेशन क्यों किया गया, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्यों किया गया, उसमें वो पूरा डिटेल में. तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ से मैं थोड़ा सा डिटेल आऊँ, बट नॉट दैट कि चैप्टर कवर हो जाए. बट अगर 8th क्लास के बच्चे हो तो उनको थोड़ा सा ये डिटेल में बताना चाहूँगी. इकोनॉमिक पॉलिसी, एक तो अगर हम उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की बात किया जाए, तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑल्सो वर हार्मफुल टू द प्रेजेंट्स. लाइक अगर परमानेंट सेटलमेंट की बात की जाए, इनिशिएटेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, मलबारी सिस्टम और रायतवाड़ी सिस्टम, ये सब इट बेनिफिशियल टू द ब्रिटिश बट हार्मफुल टू द प्रेजेंट्स.
Land revenue was very excessive on part of the peasants. They could not pay it, and comes to the hands of the moneylenders. Drain of wealth. Drain of wealth means draining. Draining of wealth from India to England without any subsequent return. कि एक तरह से नाली में बह रही है और हमें वापस में कुछ भी नहीं मिल रहा. And this theory was proponed by the great old man, that is दादाभाई नारोजी. इसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी क्वेश्चन आता है NDSC में कि who was the grand old man of India, that is दादाभाई नारोजी. And one more question, who proponed the theory of drain of wealth, that is again दादाभाई नारोजी. Drain means कि हमारे यहाँ से wealth जा रही, wealth in the form of resources, raw material, और जो सैलरीज है ऑफिसर्स की, ब्रिटिश ऑफिसर्स की, या जो सेविंग है ब्रिटिश ऑफिसर्स की, जो हमने लोन लिया ब्रिटिश को, हमें लेना पड़ा, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी वहाँ पे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटेन से लोन ले रही है और वापस रीपे इंटरेस्ट कर रही है, अगेन वो इंटरेस्ट वापस लोन के रूप में हमारे कंट्री में आ रहा है, अगेन वो वापस इंटरेस्ट के रूप में ब्रिटिश जा रहा है. इस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है. इस ड्रेन ऑफ वेल्थ से नेचुरली हमारे यहाँ की वेल्थ, हमारा पैसा कम हो रहा है, उससे हमारी यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लग पा रही है, और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज यहाँ लगा रहे हैं, तो नेचुरली कॉटन इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिल्कुल खत्म हो रही है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो ब्रिटिश की थी हार्मफुल टू द इंडियन पीपल, और सबसे पहले इकोनॉमिकली अगर हम प्रॉस्परस नहीं है तो उससे भी हमारे मन में जो है एजिटेशन होता है, गुस्सा आता है ब्रिटिश के अगेंस्ट. उस समय फेमाइन था, प्लेग था, बहुत ज़्यादा हिट कर रहे थे इंडियंस को, लेकिन ब्रिटिश जो है आज सच कुछ भी नहीं कर रही थी. उसके बदले में लाइक दिल्ली दरबार लगा रही थी. तो इस तरह से द पीपल टू अक्यूज द ब्रिटिश रूल ऑफ द मिस्ट्रीज एंड रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद अ फर्म डिटर्मिनेशन टू हिट द फाइनल ब्लो टू इट. वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड लाइटन्स रिप्रेसिव पॉलिसी. अगर हम लॉर्ड लाइटन की बात की जाते हैं तो उस समय फेमाइन और प्लेग बहुत ज़्यादा has hit the country during the governor generalship of Lord Lytton. तो लॉर्ड लाइटन ने उस कंडीशन से उबारने के बजाय एक ग्रैंड दरबार अरेंज किया इन दिल्ली एट a lavish expenditure of millions of rupees. It was the time when famine and poverty were claiming millions of victims throughout the country. साथ में एक आर्म्स एक्ट था. आर्म्स एक्ट इट इज, अब ये है कि आर्म्स एक्ट में ये था कि under this act it was declared a crime to keep an unlicensed arms or to trade in them. कि अब कोई भी इंडियंस जो अनलाइसेंस्ड आर्म नहीं रख सकते. इन अपने डिफेंस के लिए भी लाइसेंस अभी भी जरूरत होती है, अभी भी बिना लाइसेंस के हम कोई हथियार नहीं रख सकते. उस समय भी नो प्रॉब्लम इन दैट. बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि यूरोपियंस वर एन एक्सेप्शन टू दिस रूल. यूरोपियंस अनलाइसेंस्ड आर्म रख सकते थे, बट इंडियंस को लाइसेंस जरूरी था. तो ग्रेट इनजस्टिस साफ पता पड़ रहा है, रेशियल बिटरनेस है कि दे वर रिगार्डेड देम सुपीरियर इन कंपैरिजन टू इंडियंस. और उसी चीज को जब इंडियन प्रेस ने ये जो आर्म्स एक्ट पास किया, उसके अगेंस्ट में जब आवाज उठाई या इंडियंस को ये बताया कि आर्म्स एक्ट जो पास किया जा रहा है व्हाट इज अगेंस्ट द एक तरह से अगेंस्ट द जस्टिस ऑफ द इंडियन, या अगेंस्ट एक तरह से इंडियंस को क्रिमिनल माना गया, तो उस इंडियन प्रेस को क्रैप करने के लिए लॉर्ड लाइटन ने पास किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? एक तरह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर मतलब जो भी इंडियन लैंग्वेजेस की या फोक लैंग्वेज के वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के प्रेस पेपर्स है, उनको कुछ भी प्रिंट करने से पहले, कुछ भी छापने से पहले दे हैव टू गेट परमिशन टू द विद द मैजिस्ट्रेट. मतलब सेंसरशिप हो गया था कि आप ये छाप सकते हो, ये छाप नहीं सकते, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं. बट द यूरोपियन लैंग्वेज पेपर्स वर केप्ट फ्री.
वो कुछ भी छाप सकते थे, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर इंडियन लैंग्वेज के पेपर या वर्नाकुलर लैंग्वेज के पेपर को परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंसर करवाना पड़ेगा कि हम छाप रहे हैं, नहीं ये तुम नहीं छाप सकते हो. तो दिस एक्ट वाज आल्सो टर्म्ड एज गैगिंग एक्ट, and the Indians lost their faith in the British people, and they wanted to get rid of the English people as early as possible. फिर आई एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. ये भी एनटीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ऐसे इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है. व्हाट इज एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी? Just after Lord Lytton was very reactionary, was against the sentiments of the Indian people. Just after Lord Lytton, Lord Ripon came as the Governor General, and he was also known as the Ripon the Good. He was a man of liberal views and full of sympathy for the Indian people. सबसे पहले उसने क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया, और साथ में उस समय इंडियन जजेस were not authorized to hear the cases against the Europeans and to decide them under the law. अगर कोई यूरोपियन क्रिमिनल इंडियन जजेस के सामने आ रहा है, तो नाउ द इंडियन जजेस could not decide the case, could not hear the case. वो यूरोपियन क्रिमिनल का केस यूरोपियन जज ही डिसाइड करें. इट वाज अगेंस्ट द कैपेबिलिटी, अगेंस्ट द इक्वालिटी ऑफ द इंडियन पीपल. So Lord Ripon, with his law member Albert, prepared the draft of a bill which after his name, मतलब Albert, CP Albert के नाम से Albert bill आया. और इस बिल में now the Indian judges have got the authority to hear the cases against the European and to decide them under the law. अब now with this Albert bill, Indian judges could hear the case of the Europeans और could decide them कि भाई इसने ये क्राइम किया और इसको ये सजा मिलेगी under the law. But as soon as this bill comes, मतलब ये पास होने के लिए सेंट्रल असेंबली में आया, the whole Anglo-Europeans stood against this bill, and a compromise bill was passed by which now if the European criminals, अगर वो यूरोपियन क्रिमिनल आता है, तो he could demand that half of the jury must be European, मतलब आधी इंडियन होगी आधी यूरोपियन होगी. It was against the capability of the Indians, और इससे एक तरह से बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग इंडियंस के मन में आई कि इंडियंस जो ब्रिटिश है उनको एक तरह से बहुत ज़्यादा डाउन मानते हैं, अपनी इक्वल नहीं मानते, और उनसे अपनी फेयर प्ले जस्टिस की उम्मीद करना बेकार है. And with this arousing nationalism, different regional parties जो है, different organizations set up होने लग गई, not to oppose the British. उस समय भी ऐसा कोई फीलिंग नहीं थी कि ब्रिटिश को अपोज किया गया, बट टू रेज द डिमांड. ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन जैसे जमींदार सभा आई, इंडियन यूनियन आई. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ एस.एन. बनर्जी जो मैं पहले भी रेफरेंस दे चुकी हूँ कि उसने पास किया था. सुनील बनर्जी has passed the ICS examination. He was very intelligent. He has also formed the Indian Association in 1876. It was formed by एस.एन. बनर्जी. ये थोड़ी बहुत ऐसी नेशनल आउटलुक थी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मेन ये सब लोकल एक तरह से लोकल ऑर्गेनाइजेशन थी. These organization in the beginning were regional and not national in character. So लेकिन फीलिंग जो है नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा क्रॉप अप हो रही थी इंडियंस में, और बहुत ज़्यादा एक तरह से एजिटेशन था इंडियंस के मन में. तो उसी को ध्यान में रखा इट इज़ वेरी सरप्राइज कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारे इंडिया में है, ये INC या इंडियन नेशनल कांग्रेस was formed by an English retired officer A.O. Hume, जिसके फ्लैग के अंडर में हमें इंडिपेंडेंस मिली, and was formed by an English retired officer A.O. Hume in 28 December 1885.